Now today this is what we are going to do. Uh, Today we are going to talk about creating your own functions in Octave or Matlab. Okay. Now first of all you should know what is a function. You have been using function, like we have been using functions. We have been generating random numbers. We have been using the display function. We have been using the uh, random integer function. We have been using the sine and cosine functions, the plot function. We have used all these functions. Okay. uh, a function is basically a block of code that does something specific. In order to do some specific computation or specific operation on a data, you can create or write a function to do that operation. For example, sine is a very specific operation. You give it an angle, the angle can be, for the sine function, the angle is in radians, and it calculates the trigonometric sine ratio for that angle, the ratio between the perpendicular and the hypotenuse of a triangle for that particular angle. So it is a very specific operation, a very specific computation that this function does. Similarly, the cos function, it calculates the cosine ratio, the ratio between the base and the hypotenuse of a right angle triangle. Similarly, the rand function, the random integer function, they also do very specific tasks. They perform a very specific operation or computation. We have other functions. We have the max function, the min function, the mean function. The max function finds out or calculates the maximum value in a vector or a matrix. For a matrix, its operation is slightly different. You also know about the zeros function. So it creates a vector or matrix with all zeros. The ones function, which creates a vector or matrix with all ones. The I function, the identity function. So these are all functions. They are built in to Octave or Matlab. You can call these functions directly just by writing their name and providing the input arguments required by those functions. You can also write your own functions which you can call or which someone else can call, and they can perform certain tasks, whichever tasks you might want. So for example, here in this session we would like to create certain function. Now if you remember from our last lab, I asked you to write script files that would determine whether a particular number is prime or not. We did that. Similarly, we also wrote script files, I guess, to find out, maybe not in the last lab but before that, to find out the factors of a number. So we can extend upon that. We can write a function to which we can give some number as input, and that function would return us true or false depending upon whether that number which we provided it as input is prime or not. So whenever we want to find out whether a number is prime or not, we'll call this function is prime. We can call it is prime, and that function will be given as an input, and it would return us some output value. That output value would tell us whether this particular number which was provided as input to this function is prime or not. Similarly, we can write other functions. We can write, for example, the isPerfect function. We talked about perfect numbers. So perfect numbers are numbers which are equal to the sum of their proper factors. So you know, when one number divides another number, then the first number is called a factor of the second number. Okay. So for example, 1 is a factor of 6, 2 is a factor of 6, 3 is a factor of 6, and 1, 2 and 3, these are all proper factors because they are factors of 6 and they are less than 6. 6 is also a factor of 6. 6 divides 6. Any number is a factor of itself, but it is called an improper factor. Why? Because it is equal to the number. It is not less than the number. So for the number 6, all the proper factors are 1, 2 and 3. If you add 1, 2 and 3, you get 6. So that means 6 is a perfect number. 6 is a perfect number. Similarly, I guess we also found that the 28 is another perfect number. So 28 has the factors 1, 2, 4, 7,
14, 28. 28 is an improper factor. Get rid of 28. So the proper factors that we have, they are 1, 2, 4, 7, and 14. Now if you add all these factors, 1 plus 2 is 3, 3 plus 4 is 7, 7 plus 7 is 14, 14 plus 14 is 28. So all the proper factors of 28, they add up to 28. So that means 28 is also a perfect number. Now we can write a function is perfect, and we can give that function a number, and that function can then find whether that number is a perfect number or not. If it is perfect, it can return us the value true. If it is not perfect, it can return us the value false. Okay, so we can create functions or blocks of code that would do just one specific task, and then we can reuse that block of code. We can call it again and again to find out to execute that computation. Just like whenever we want to generate random numbers, we call the rand function or the rand integer function, and we can call it as many times as we want. Okay, so I hope like this clarifies to you what a function is. Now how do you write a function? So we'll see how to write a function. We'll actually write a function, and then we will call that function, and we will use it to do something useful. So how do you write a function? So this is how you write a function. So first of all, you use the keyword function. You say function, and then after that you specify the output of the function. So all the outputs of the function. Okay, so you write the keyword function, and then after that the output of the function. Now the output of a function in Matlab or Octave can be just one value, one variable, or it can be more than one value or more than one variables. Okay, so this is unique, not maybe unique to Octave or Matlab, but in other languages, for example in C, C++, Java, I'm not sure about Python, but I guess in Python as well, a function can only return one value, one variable. It cannot return more than one value. Okay? So usually a function returns only one variable or one value. But here in Octave, you have this flexibility that whatever function you write, it can return more than one value. Okay, so that is a powerful feature that is not available in other languages. So in Octave, you have this facility. So you can return a single value, or you can return more than one values from any function. If you want to return more than one value, you specify that as a list using square brackets. You specify that as a list. Then you use this assignment operator, and after that you provide the function's name, and within these parentheses you provide the input to the function, all the input values required by that function. So we call these inputs to a function as arguments to the function or parameters to the function. Okay, we call it as arguments to the function or parameters to the function. For example, the sine function, what do we give it as input? We give it the angle in radians as input. So the argument to the sine function is the angle, or the parameter to the sine function is the angle. Similarly, to the cosine function, it is an angle. To the tangent function, it is an angle. To the zeros function, we have used the zeros function to create a vector of with all zeros. So you give it the dimensions of the vector or matrix as input. So the number of rows and columns that we want to have in the output of that function, that is provided as parameter or input to that particular function. So this is what we start the function with, the keyword function, then a list of outputs of that function, followed by this assignment operator, then the function's name, and a list of inputs or arguments to that function. So it will be clarified once we write the actual function. You end the function with the end keyword. So the function starts with this first line, and you can end that function with the end keyword. It is optional. You can choose to end it with the end keyword.
and you can choose not to write the end keyword, but you should write the end keyword. Okay. The other thing that you should remember about writing functions in MATLAB or Octave, and this is specific to MATLAB and Octave, is that the function that you create, you should save it in a script file which is named exactly as the function's name. The function's name and the script file in which that function is stored, their names should be exactly the same. Okay. Now this is not a requirement in C++ or in C or in Java. I'm not sure about Java. Maybe in Java we have a similar requirement, but in C and C++ we do not have this requirement. Okay. Similarly in Python also we do not have this requirement. But in Matlab and Octave, if you want to write a function or if you want to create a function, you have to store that function in a script file which is named exactly as that function. Okay. So this is something that you should remember. Save a function in a script file with the same name. A script file can have multiple functions. The name of the file must match the name of the first function in the file. You can write multiple functions in a script file. So how should you name that script file? ठीक है ना, हमने अभी कहा कि स्क्रिप्ट फाइल का नाम और फंक्शन का नाम एक जैसा होना चाहिए. तो अगर एक स्क्रिप्ट फाइल में एक से ज़्यादा फंक्शन है तो उसका नाम फिर उन तमाम फंक्शंस के जो नाम है उन सबको मिला के उसका नाम होगा नहीं. उस फाइल का फिर नाम उस फाइल में पहले लिखे गए फंक्शन के नाम की तरह होगा. ठीक है. लेकिन ideally you should always try to write a single function in a single script file. If you have multiple functions, put them in separate script files. ठीक है. Now we'll write a function and then you would understand like इसका मतलब क्या है. ठीक है. So let's do that. So let's go to the Octave environment. Let me clear the command window. Let me go to my current directory where I have stored the script files. ठीक है. So this is my current directory जहाँ पे script files मौजूद हैं. यहाँ पे already मैंने एक script file we have created. It's by the name is prime. ठीक है. अच्छा. So let us do something else. Let us create or write a script file or a function is perfect. ठीक है. So we are going to write a function is perfect. ठीक है. Is perfect क्या करेगा? We'll give it as input an integer value. एक integer value इसको एक scalar value as input देंगे and it will find out whether that number is a perfect number or not. If it is perfect, it would return true. If it is not, it would return false. ठीक है. So that is what we are going to do. So we are going to write a function and that function is जी Octave सॉफ्टवेयर का तो कोई कोड नहीं है. उसको इंस्टॉल करने के लिए we need administrate. हाँ, लास्ट टाइम इंस्टॉल नहीं किया था. अच्छा मैं आ रहा हूँ, बैठे हैं. Okay, so we want to write a function by the name of isPerfect. What would be the purpose of this function? So isPerfect function would do one task and one task only. That task would be, we would give it an integer value as input and it would find out whether that integer is a perfect number or not. How is it going to find out whether it is perfect or not? It is going to find out all its proper factors and it is going to find the sum of those proper factors. ठीक है? So if the sum of those proper factors is equal to the number itself, then that number would be declared as a perfect number and we would return a true value. Okay?
So how do you write the function? You start with the keyword function. You say function, then you specify the output or outputs of this function. So say at the moment we want only one output. You can give any name to that output, any valid name, any valid identifier or variable, whatever you want to call it. That is up to you. Okay, so you can call it X or Y or Z, or you can call it as output. Okay, so you can give it any valid name. So say for example we want to call it as Y. Let's say we want to call the output of this function as Y. So Y would be the variable which would be returned as output of this function. So whoever calls this function, that person or function would be returned the value of Y. Okay? So the value of Y would be given as output to that calling function. That would be like that. Now then we have the assignment operator. So we'll have this function is perfect. Uske baad we specify the name of the function. So the name of this function is perfect. The name of this function is perfect. So we are asking a question. We will give it a number as input, and we are asking this function a question: is this number a perfect number or not? Okay? So how would we provide that number as input? So we would provide that number as input, and the input would be specified in a pair of parentheses. Okay? So you don't need to say anything else. You just need to say is perfect X. So we want to ask this question whether X is a perfect number or not. And X is supposed to be a scalar. X here is supposed to be a scalar. So why is it supposed to be a scalar? It's up to us. The person who is writing this function, it is up to that person to determine what is X going to be. Is X going to be a scalar? Is X going to be a vector? Or is X going to be a matrix? What can X be? So right now, since we are writing this function, so we are specifying that X is going to be a scalar value. This function is not going to handle vectors or matrices. We can make it handle vectors and matrices, but right now we are not going to do that. We are going to keep things slightly simpler. Okay? So this is what you do. And then if you press enter, automatically end function appears. You should not be using end function. Just get rid of this function and retain only end. Okay? Now if you save this file, so right now we have not saved this file. If you see here, we have unnamed and this asterisk sign here. So we have not saved this file yet. If I press Ctrl plus S, or if I go to the file menu and then press the save button, so I am taken to the current directory and I am asked to provide a name for this file. So the name should be exactly like this function. The name should be exactly like this function. The function is perfect. So the name should be exactly is perfect. Not only should the spelling match, the case should also match. So IS is in lowercase, and then we have capital PERFECT. Okay? So it should match exactly. Is perfect. That is the name of this function. That should be the name of the file. Okay? And you should save it as such. So now the name of the file appears here, and it is exactly the same as the name of the function, is perfect. It has this extension .m. .m is the file extension. .m is the file extension. Every file that you create in Windows, it has a file extension. The file extension tells the Windows which type of file it is. So if you create a Word document, it has the file extension .docx, docx. If you create a PowerPoint file, it has the file extension .pptx. Okay? PowerPoint and X is basically the latest version. So before that we had simple PowerPoint PPT. If you create a simple text file, it has the extension .txt. And if you create an image file, JPEG image file, it has the extension .jpg or .jpeg. So I guess we did something with file extensions. We tried to change the file extensions, and then if you do that, the application associated with that type of file extension
the icon of the file changes. If you change the file extension of a Word document to a JPEG image .jpg, so its icon would change, and whenever you double click on that file, it would be opened in the image viewer instead of Microsoft Word. So I guess we, in the theory part of this course, we did talk about that. Now what is this function going to do? This function is going to take x and determine whether x is a scalar, as x is a perfect number or not. So how do you determine whether a number is perfect or not? You find out the sum of its proper factors, and if the sum of proper factors of x is equal to x, then you say it is perfect, otherwise it is not perfect. Okay? So how do we determine, how do we find out the factors of x? x के factors किस तरह से मालूम करेंगे? फैक्टर क्या चीज़ होती है? वो नंबर्स जो कि x को डिवाइड करें, यानी x को डिवाइड करें और रिमाइंडर आपके पास 0 आए. तो x के हमने तमाम प्रॉपर फैक्टर्स मालूम करने. कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले हम x को 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, x के हाफ तक जाएंगे. x अगर 500 है तो 250 तक जाएंगे, x अगर 1000 है तो 500 तक जाएंगे. तो जो नंबर इसको डिवाइड करता गया वो इसका फैक्टर होगा, और उसका सम हम मालूम करते जाएंगे, उसको हम ऐड करते जाएंगे तमाम फैक्टर्स को. जो डिवाइड नहीं करता वो फैक्टर नहीं होगा, तो हम उसको स्किप करते जाएंगे और नेक्स्ट नंबर को चेक करते जाएंगे. ठीक है? सो वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ x. वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ x and we have to find their sum. So that means we need a variable to store the sum of proper factors. So सबसे पहले we create a variable sum and we initialize it with the value 0. Initially sum would be 0. Now we need to do something जिसके ज़रिए से हम x के factors मालूम कर सकें. तो अगर आप थोड़ा सा भी इस पे सोचें, ये ऐसा काम है जिसको आप रिपीटेडली करेंगे. मतलब आप x को पहले 1 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर चेक करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5, 6 अप अंटिल x के हाफ तक आप जाएंगे. सो दैट मीन्स यू नीड अ लूप, यू नीड अ रेपिटेशन स्ट्रक्चर. आपको एक लूप की ज़रूरत है. सो लेट अस यूज़ द फॉर लूप. सिंपल फॉर लूप को फिलहाल इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है? तो फॉर लूप को इस्तेमाल करें. फॉर d ये हमारा डिवाइज़र होगा, इज इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट लेंगे और हम कहाँ तक जाएंगे? x के हाफ तक जाएंगे, और डिफ़ॉल्ट स्टेप साइज होगा. ठीक है? 1 का. सो हम स्टार्ट लेंगे d इज इक्वल टू 1 से और हम जाएंगे x के हाफ तक. x अगर 50 है तो 25 तक जाएंगे, x अगर 60 है तो 30 तक जाएंगे. ठीक है? हाफ से ऊपर फिर वो फैक्टर नहीं होता. 60 का जो सबसे हाईएस्ट प्रॉपर फैक्टर होगा दैट वुड बी 30. 31 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 60. ठीक है? सो एनी नंबर ग्रेटर देन हाफ ऑफ अ नंबर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर. तो सिंस वी आर लुकिंग फॉर प्रॉपर फैक्टर्स, तो हमें x तक जाने की जरूरत नहीं है. वी नो कि x इज अ फैक्टर, उसकी हमें जरूरत नहीं है. अच्छा, अगेन लेट्स गेट रिड ऑफ दिस फॉर फ्रॉम एंड फॉर. अब इस लूप में हमने क्या करना है? वी वुड डिवाइड x बाय d and we would look at the remainder, और उससे हम पता लगाएंगे कि आया d x का फैक्टर है या नहीं. ठीक है? सो हम क्या करेंगे? हम x को d से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर मालूम करेंगे. उसके लिए वी हैव द फंक्शन मॉड और मॉड्यूलो. अगेन मॉड इज अ फंक्शन, इट डज समथिंग स्पेसिफिक. क्या करता है? किसी भी नंबर को डिवाइड करता है विद अनदर नंबर एंड इट रिटर्न्स यू द रिमाइंडर. ठीक है? सो वी आर गोइंग टू डिवाइड x by d because we want to find out whether d is a factor of x or not, and we are going to look at the remainder. So mod would return us the remainder when x is divided by d. We want to compare it with 0. अगर रिमाइंडर 0 के बराबर है, इसका मतलब है कि d is a factor of x. और ये काम हम कब करते हैं? ये काम हम करते हैं एक if स्ट्रक्चर में. So if मॉड्यूलो x कामा d इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि d इज अ फैक्टर ऑफ x. ठीक है? d इज अ फैक्टर ऑफ x. तो हमने क्या करना है? d को ऐड करना है. किस चीज़ में ऐड करना है? ये जो वेरिएबल सम है इसमें हम ऐड कर देंगे, क्योंकि सम जो है वो तमाम फैक्टर्स का सम स्टोर कर रहा है. तो इनिशियली सम 0 है. हमें जब पहला फैक्टर मिला तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस
डी, ठीक है, सम इज इक्वल टू सम प्लस डी, पहला फैक्टर हमें मिला। फिर हम जाते हैं D2 हो जाता है, 2 से हम x को डिवाइड करते हैं, तो अगर तब भी रिमाइंडर 0 है तो हम 2 को भी सम में ऐड कर देते हैं, तो 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, तो जब ये लूप एक मरतबा चलेगा तो सम की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर वो नंबर इवन है तो 2 से भी डिवाइड होगा, तो फिर उसकी वैल्यू, सम की वैल्यू हो जाएगी 1 + 2 3। अगर 3 से भी डिवाइड हो जाता है तो 3 भी उसमें ऐड हो जाएगा, और ये चलता जाएगा सिलसिला, ठीक है। वंस हम ये लूप मुकम्मल कर लें तो हमारे पास x के तमाम प्रॉपर फैक्टर्स आ जाएंगे, बल्कि उनका सम हमारे पास आ जाएगा इन द वेरिएबल सम। वंस दिस लूप इज डन एग्जीक्यूटिंग, द वेरिएबल सम विल हैव द सम ऑफ ऑल द प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ x के तमाम प्रॉपर फैक्टर्स का सम जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर के बराबर होता है, ठीक है। तो जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो फिर हमने टेस्ट करना है कि आया ये जो सम है ये x के बराबर है या नहीं, इस नंबर के बराबर है या नहीं, ठीक है। हमने ये पता करना है कि ये जो फैक्टर्स का हमने सम मालूम किया है, क्या ये इस नंबर के बराबर है या नहीं। अगर तो है, इफ सम इज इक्वल टू x द नंबर इटसेल्फ, ये वो नंबर है जिसका हम पता लगाना चाह रहे हैं कि ये नंबर परफेक्ट है या नहीं, और इस वेरिएबल में हम इसके फैक्टर्स, प्रॉपर फैक्टर्स का सम स्टोर कर रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है कि ये नंबर परफेक्ट है। ये नंबर क्या है, परफेक्ट है। तो ये जो इस फंक्शन का आउटपुट फिर क्या होना चाहिए, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू। y शुड बी देन ट्रू, ठीक है, ट्रू। y की वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए, ट्रू, कि हाँ ये नंबर परफेक्ट है। अगर ये सम और x बराबर नहीं है तो दैट मीन्स कि ये जो नंबर है इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, तो फिर इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, फॉल्स। तो अगर सम ऑफ द प्रॉपर फैक्टर्स इज इक्वल टू x, देन x इज अ परफेक्ट नंबर एंड द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन विच इज y, it should be true. If that is not the case, then the output of this function should be false. ठीक है, फंक्शन हमने लिख लिया। Now we have to use this function. कैसे यूज करेंगे, अच्छा, ये जो फंक्शन है ना, ये हमारी करंट डायरेक्टरी में मौजूद है। ये हमारी करंट डायरेक्टरी है और इस करंट डायरेक्टरी में इस परफेक्ट के नाम से ये फंक्शन मौजूद है, ठीक है। तो करंट डायरेक्टरी में इस फंक्शन का मौजूद होना ज़रूरी है। अगर ये करंट डायरेक्टरी में मौजूद ना हो तो फिर हम इसको कॉल नहीं कर सकते। फिर ये जिस फोल्डर में मौजूद है उस फोल्डर को हमने अपनी पाथ में ऐड करना है। ऑक्टेव या मैटलैब की जो पाथ है ना, पाथ एक सिस्टम प्रॉपर्टी, एक वेरिएबल है। तो बेसिकली ऑक्टेव जो है उसमें उन तमाम फोल्डर्स के एड्रेसेस स्टोर करता है जिसमें आपकी स्क्रिप्ट फाइल्स मौजूद हो सकती हैं और जिनको आप एग्जीक्यूट करना चाहेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो फिलहाल उसको ना छेड़ें, आप सिंपल जो जहाँ पे आपने ये स्क्रिप्ट फाइल स्टोर की हुई है, यहाँ करंट डायरेक्टरी में उस स्क्रिप्ट फाइल तक पहुँच जाएं, ब्राउज करें, पहुँचें उस स्क्रिप्ट फाइल तक, ठीक है। एंड यू शुड बी इन दैट डायरेक्टरी, उसको ओपन कर लें तो उसमें जो भी स्क्रिप्ट फाइल्स होंगी वो आपको यहाँ पे नजर आएंगी। तो ये स्क्रिप्ट फाइल हमने इसमें स्टोर की है। अब इसको अगर आप यहाँ से डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे ना तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब आप कहते हैं सेव फाइल एंड रन, तो ये ठीक तरीके से नहीं होगा क्योंकि इसको इनपुट चाहिए, ठीक है। तो ये ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप इसको करें एग्जीक्यूट तो यहाँ पे ये ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपसे कह रहा है कि एक्स अनडिफाइंड नियर दिस, ठीक है। अच्छा, तो इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या होगा, तो यहाँ से यू कैन कॉल इट जस्ट लाइक एनी अदर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम जीरोस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। जीरोस बिल्ट इन फंक्शन है ऑक्टेव का। सो वी वांट टू क्रिएट अ वेक्टर ऑफ ऑल जीरोस और उस वेक्टर का ऑर्डर है 1/5। सो यू जस्ट राइट द नेम ऑफ द फंक्शन, प्रोवाइडेड द आर्गुमेंट्स एंड यू प्रेस एंटर और वो कॉल हो जाता है।
we can do exactly the same with the isPerfect function. So write the name of the function isPerfect exactly as it is and give it some input. So इसको 4 की input दे दें. We want to find out 4 perfect number है या नहीं. Press enter. Answer is 0. 0 means false. So 4 is not a perfect number. We want to find out whether 6 is a perfect number. Answer is 1. Yes, 6 is a perfect number. We want to find out whether 16 is a perfect number. No. ठीक है? We want to find out whether 28 is a perfect number. Yes. We want to find out whether 280 is a perfect number. No. ठीक है? So you can call the isPerfect function like this. आप इसको इस तरीके से कॉल कर सकते हैं और वो आपको बताएगा कि जो आर्गुमेंट इनपुट आपने उसको दी है क्या वो परफेक्ट है या नहीं. ठीक है. अच्छा, अब ये कैसे होता है, ये एग्जीक्यूशन सब कुछ ये कैसे होता है? सो let us do it in a step by step manner. ठीक है. How do we do that? So I'll insert a breakpoint here. What does the breakpoint do? I guess we have talked about it. So breakpoints, it is a mechanism that allows you to debug your code. If your code has some problem, some bug. ठीक है. Bug means there is an error in your code which does not allow your code to run properly or generate the correct result जैसे कि आप चाहते हैं. So then you need to know okay, where is the problem. In order to find out the problem, you need to execute your code in a step by step manner. बारी बारी कि अच्छा इस स्टेप के बाद क्या होता है, इस स्टेप के बाद क्या होता है, इस स्टेप के बाद क्या होता है. तो फिर वहाँ आपको पता चल जाता है कि ये जो स्टेप है ये वो काम नहीं कर रहा जैसे हम चाह रहे हैं. ठीक है. So in order to be able to do that, you can use breakpoints. breakpoint क्या करता है, वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है एक पॉइंट पे. वहाँ पे फिर रुक जाती है आपकी एग्जीक्यूशन, फिर वो आप स्टेप बाय स्टेप वहाँ से आगे जा सकते हैं. सो हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन को रोकना चाहते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इन दिस फंक्शन. ठीक है. सो लेट अस इंसर्ट द ब्रेक पॉइंट हियर. जब कभी भी एग्जीक्यूशन यहाँ पे पहुँचेगी तो रुक जाएगी, फिर आप बारी बारी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकेंगे. ठीक है. सो लेट्स सी कि क्या होता है. लेट अस कॉल दिस फंक्शन 4 के लिए इसको कॉल करते हैं. ठीक है. सो व्हेन आई प्रेस एंटर, तो आप जो है ना ये डिबग मोड में चले जाते हैं और यहाँ अगर आप अपने कोड में आए, यहाँ पे अब आपको ये येलो कलर का एक एरो नजर आ रहा है. ठीक है. रेड जो डॉट है उसके ऊपर ये येलो कलर का एरो नजर आ रहा है. तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन रुक गई है. अब आप स्टेप बाय स्टेप इस एग्जीक्यूशन को चला सकते हैं. कैसे चलाएंगे? ये जो रन मेन्यू है ना, इसमें डिबग मेन्यू, इसमें अगर आप जाए ना, इसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं. इसमें एक है स्टेप का ऑप्शन F10. ठीक है. सो F10 allows you to execute your program a single step. ठीक है. उसमें स्टेप इन भी है, स्टेप आउट भी है. स्टेप इन allows you, अगर आप किसी फंक्शन को कॉल करें तो आप उस फंक्शन में भी एंटर कर सकते हैं. ठीक है. सो राइट नाउ वी आर ऑलरेडी इन अ फंक्शन. तो आप अगर F10 भी प्रेस करते जाए ना, तो उसका शॉर्टकट क्या है स्टेप का? F10. तो अगर आप अपने कीबोर्ड पे F10 प्रेस करते जाएं तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगी. ठीक है. अच्छा, सो राइट नाउ हमारे पास सम वेरिएबल नहीं क्रिएट हुआ. यहाँ पे आपको सम नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे आपको x नजर आ रहा है. वर्क स्पेस में देखें ना, x नजर आ रहा है. x में क्या वैल्यू है? 4. ये वैल्यू कहाँ से आई? ये आपने यहाँ पे जो इनपुट प्रोवाइड की थी ना, वो x में कॉपी हो गई है. सो यहाँ इनपुट आपने 4 दिया था. दैट इनपुट हैज बीन कॉपीड इनटू द वेरिएबल x, जो कि आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था कि इनपुट मेरे पास x वेरिएबल में आएगी. वेरिएबल x में हमारे पास इनपुट आएगी. सो x holds the value 4. This value was provided by you as input here. कमांड विंडो पे आपने इसको एज इनपुट प्रोवाइड किया था. So it can be, input can be a constant value, input can be a variable as well. You can have a variable, a scalar variable, और उसको आप provide कर सकते हैं as input. ठीक है. अच्छा, there is another input argn. This is basically, अच्छा, let us forget about it for the time being. If we have time, maybe we'll talk about it in some other session, but right now focus on this one. So the input that you provided here, that is copied into the variable x, जो कि आपने स्पेसिफाई किया था कि इनपुट मेरे पास इस फंक्शन में x की सूरत में आएगी.
ठीक है, तो वो x में कॉपी होगी। नाउ x होल्ड्स द इनपुट वैल्यू विच इज 4, ठीक है। तो ये जो लूप है ये स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 एंड इट विल गो अप अंटिल 4/2, x/2 4/2 2, सो 1 2 दो मरतबा ये लूप चलेगी, ठीक है। वेरिएबल सम अभी यहां पे क्रिएट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, जब मैं F10 प्रेस करूंगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। सम वेरिएबल हैज बीन क्रिएटेड और उसकी वैल्यू 0 है, जैसे कि हमने यहां स्पेसिफाई किया था, ठीक है। अच्छा, अब ये लूप एग्जीक्यूट होगी, तो लूप में जो लूप काउंटर है D, वो भी अब आपको यहां पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ले ये तब नजर आएगा जब ये F10 में प्रेस करूंगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लूप काउंटर D स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा x/2 तक या 4/2 तक, तो 2 तक। सो D की वैल्यू 1 होगी पहले, फिर 2 होगी, दो मरतबा सिर्फ ये एग्जीक्यूट होगा। और दोनों 1 और 2 को हम चेक करेंगे कि वो x के फैक्टर्स हैं या नहीं, ठीक है। सो चेक करते हैं, लेट्स प्रेस F10 अगेन, तो देखें D भी क्रिएट हो गया, D की इनिशियल वैल्यू है 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट में हम x को डिवाइड करेंगे विद 1। x इज हमारे पास x4 है, तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इफ यू प्रेस F10 अगेन, तो ये यहाँ पे आप आ जाएंगे, ये कंडीशन ट्रू है, यू आर हियर। अगर आप F10 फिर प्रेस करेंगे तो सम जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस डी, डी इज अ फैक्टर, डी इज इक्वल टू 1 वाज अ फैक्टर, तो वो ऐड हो जाता है वेरिएबल सम में, तो सम में वी हैव 1 नाउ। फिर हम आ गए यहाँ पे, अब डी की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। अब हम 2 को चेक करना चाहते हैं कि क्या 2 x का फैक्टर है या नहीं, तो 2 भी x का फैक्टर है क्योंकि x 4 है, 2 से डिवाइड होता है, तो हम कहते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस डी, ठीक है। तो सम में 1 है हमारे पास, उसमें हम d2 को ऐड करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, सम 3 हो जाएगा इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद। सो नाउ सम इज 3, और ये लूप खत्म हो गया इसकी एग्जीक्यूशन, क्योंकि इस लूप में एक d की वैल्यू 1 और 2 के लिए चलना था, ठीक है। सो वी आर आउट ऑफ दिस लूप। नाउ इट इज टाइम टू कंपेयर के सम x के बराबर है या नहीं। तो x हमारे पास 4 है और x के प्रॉपर फैक्टर्स का जो सम है वो 3 है, तो दे आर नॉट इक्वल। सो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इफ यू प्रेस F10, so you'll jump to statement at line number 11. if you press F10 here, तो आउटपुट जो y है उसको आपने वैल्यू असाइन कर दी, y जो है उसकी वैल्यू है 0, दैट मीन्स कि x इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, और जब हम एंड को प्रेस करेंगे तो आप इस फंक्शन से निकल जाएंगे, ठीक है। वो तमाम वेरिएबल्स खत्म हो गए और आपका जो आउटपुट है वो आंसर वेरिएबल में स्टोर हो गया, ठीक है। बाकी तमाम जो वेरिएबल्स थे वो खत्म हो गए, क्योंकि वो उस फंक्शन के एग्जीक्यूशन तक ही होने थे। उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन जैसे खत्म हो जाती है तो वो तमाम वेरिएबल्स d, x, y तमाम खत्म हो गए, ठीक है। उनको वर्क स्पेस से रिमूव कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है। तो दिस इज हाउ अ फंक्शन एग्जीक्यूट्स, दिस इज हाउ यू राइट और क्रिएट अ फंक्शन, एंड दिस इज हाउ यू कॉल अ फंक्शन, ठीक है। नाउ लेट मी क्लियर दिस ब्रेक पॉइंट, ठीक है, एक के लिए ही समझना काफी है। सो यू इफ यू अगर आपको इसकी समझ नहीं आती, यू कैन ऑलवेज एग्जीक्यूट इट इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। The other thing that I want to demonstrate is to you. Now we have created a function, we want to use this function, ठीक है। एक तरीक़ाकार यूज करने का ये है कि आप कमांड विंडो से यूज करें। दूसरा तरीक़ाकार क्या है, you create a script file. Let us create a script file. Now this is not some function, but this is a script file, जनरल जो हम वैसे भी क्रिएट करते हैं। सो आज हमारे पास May 31 है, सो May 31, 2022, ठीक है। एंड से दिस इज which lab? Lab 7, say for example lab 7. Now this is a script file just like the other script files जिसमें there wasn't any function. In this script file हम क्या करना चाहते हैं, we want to find we have a vector
एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि उस वेक्टर के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो परफेक्ट हैं या नहीं. ठीक है. So that is what we want to do. So let us create a vector, say a is equal to, so a में पहले हम say 4 की वैल्यू है, then we have 6, then we have say 10, then we have say 20, 28, 36, ठीक है, 49. Say this is a vector that we have, and we want to find out okay, whether 4 is perfect number or not, 6 is perfect number or not, 10 is a perfect number or not, 20, 28, 36, 49, बारी बारी सबको हम जानना चाहते हैं कि ये perfect numbers हैं या नहीं. ठीक है. That is what we want to do. ठीक है. So how would we do it? So ये हमारे पास एक वेक्टर है और इस वेक्टर के हर एलिमेंट को हम देखना चाहते हैं कि वो एक परफेक्ट नंबर है या नहीं. So हमारे पास we have a function is perfect. That function tests a scalar value for perfection, okay, whether that scalar is perfect or not. So we have to call that function again and again for each of these values. ठीक है. And we have to check the output of that function. तो नंबर 1, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि since we are going to test each element of this vector a for perfection, that means we need a loop. ठीक है. So for say c is equal to 1 to length of a, so हमने a के हर एलिमेंट को चेक करना है कि वो परफेक्ट है या नहीं. तो हमने इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट लेना है और इसकी लेंथ तक, इस वेक्टर की लेंथ तक जाना है हर एलिमेंट को टेस्ट करने के लिए. टेस्ट कैसे करना है फॉर परफेक्शन? सो वी हैव दिस वेरी गुड फंक्शन इज परफेक्ट. ठीक है. एंड इट रिटर्न्स अस अ बूलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स. सो ऑल वी नीड टू डू इज वी नीड टू कॉल इफ इज परफेक्ट. इज परफेक्ट फंक्शन को हमने कॉल करना है. अच्छा, इफ इट इज ट्रू, इफ रिटर्न्स एज अ ट्रू वैल्यू, तो हम लिखेंगे कि जी ये नंबर परफेक्ट नंबर है. इफ दैट फंक्शन रिटर्न्स एज अ फॉल्स वैल्यू, तो हम कहेंगे कि जी ये नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है. ठीक है. सो इफ द, अच्छा, इसको इनपुट क्या जाएगी इस परफेक्ट को? तो ये जो वेक्टर ए है इसका एलिमेंट एट इंडेक्स सी, ये इनपुट होगी. तो पहला जो एलिमेंट है at index c is equal to 1, फिर at index c is equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7. So बारी बारी हम इस वेक्टर के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे by providing the index of those elements. तो इंडेक्स नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. तो लेंथ ऑफ a तक ये इंडेक्सेस जाएंगे. तो दिस वुड बी द इनपुट टू दिस फंक्शन. फिर ये फंक्शन जो है चेक करेगा कि आया ये जो इनपुट है ये परफेक्ट है या नहीं. अगर तो परफेक्ट है तो इट वुड रिटर्न ट्रू. तो हमें यहाँ कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है कि इज इक्वल टू ट्रू और नॉट. इफ इट इज ट्रू देन इट वुड बी ट्रू. तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी. तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ हम इस नंबर को डिस्प्ले करेंगे ए सी, और साथ में ये डिस्प्ले करेंगे कि दिस इज अ परफेक्ट नंबर. ठीक है. डिस्प्ले is a perfect number. ठीक है. अच्छा, if the return value of the is perfect function is not true, तो हमने ये मैसेज डिस्प्ले करना है. पहले तो इस नंबर को डिस्प्ले करेंगे और फिर साथ में ये लिखेंगे कि it is not a perfect number. ठीक है. So now we have written a code or a script file in which we are reusing the function that we just created. इस फंक्शन को हमने क्रिएट किया is perfect. अब उसको हम बार बार reuse कर रहे हैं. ठीक है. in order to find out कि हमारे पास ये जो वेक्टर है उसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं आया वो परफेक्ट हैं या नहीं है. ठीक है. that is what we want to do. अच्छा, before that let us clear the command window and clear the workspace. ठीक है. अच्छा, now we can execute this script file. So let us do that. ठीक है. Let us say save and run. और
यहाँ पे क्या कह रहा है जी, डिस्प्ले AC सिंटेक्स एरर। अच्छा, इसमें क्या एरर है? दिस इज द वेक्टर A और ये उसका इंडेक्स है C। अच्छा, यहाँ पे we have missed a parenthesis, ठीक है, that is why we had this problem. Again save and run. अच्छा, so देखें जब आप उसको रन करते हैं ना तो वो तमाम नंबर्स को बारी बारी चेक करता है। पहले 4 को इट इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर, 6 इट इज़ नॉट अ परफेक्ट इज़ अ परफेक्ट नंबर, 10 इज़ नॉट, 20 इज़ नॉट, 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर, 36 इज़ नॉट, 49 इज़ नॉट, ठीक है। अच्छा, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है, समझ आ गई सी। So what did we do in this session? So first of all, we created this function is perfect, and this is how you create a function. You start with the keyword function, you specify the output value of that function. So it can be one value or one variable, ठीक है, or it can be, this variable can be a vector, it can be a matrix, ठीक है, or you can return multiple variables. You can return a list of variables as output in Octave or Matlab, ठीक है. Then you use the assignment operator and then you specify the name of the function, ठीक है. This should be a valid identifier, and then you specify input to this function. So this is the syntax that you have to follow. ये grammar है. These are requirements of the Octave environment. So you have to follow this syntax, ठीक है. Now every function ends with the keyword end, but the end keyword is optional here. अगर आप इसको नहीं भी provide करते, it's still good enough, ठीक है. Your code is going to work fine, ठीक है. We did not get any error. Basically it's the output of your code. अगर आपको फर्क महसूस नहीं हो रहा तो let me add a couple of values. So now you would feel the difference, ठीक है. So this is the output of your code. So whether you have this end keyword in the end or you don't have it here in the is in the function, it doesn't matter, ठीक है. But you should always have the end keyword. आपको पता होना चाहिए कि आपके function की boundary कहाँ से start होती है, कहाँ ख़त्म होती है, ठीक है. अच्छा, this is the output of this function. This is the input to this function. So you must be very clear about these things. So the is perfect function is going to return this value as output, and this is the input to this function. So output return करने का तरीका क्या है? So you have to assign some value to this output variable inside the body of the function, ठीक है. This is the body of the function. This is the body of the function, the code that does the computation that this function is supposed to do. This is the body of this function. So y is the output of this function. So we specify, we assign some value to this output y within the body of this function, ठीक है. Now इस function का क्या काम था? It was supposed to find out whether the number x is perfect or not. How do you do that? So you find the factors of x, the proper factors of x, by dividing it from 1 to x by 2, with all these numbers starting from 1 to x by 2, and checking out the remainder. If the remainder is 0, that means d is a factor of x. So you sum it. You accumulate the sum of all the factors in the variable sum. Once you are done finding out the sum of all the proper factors of x, you compare the sum with the number x. If they are both equal, that means x is a perfect number. So you return the value true. If they are not, that means x is not a perfect number. So you return the value false. So you assign y the output, the value false. Then we learned how do you call this function. So you call this function, you can call it directly from the command window, and this is how you do it. You can just write the name is perfect,
and give it some value, and it would find out whether that number is perfect or not. So 280 is not perfect. Or you can call it from another script file. Okay? So this is another script file, and in that script file we have written code, and in that code, through that code, we are calling the isPerfect function again and again within a loop. Okay? So this is how you reuse your code. Okay? That is the purpose of creating functions. You write it once and you use it as many times as you want. एक मरतबा आप फंक्शन क्रिएट करते हैं, फिर जितनी मरतबा आप चाहें उसको इस्तेमाल करना चाहें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है? So hopefully you would be able to write your own functions. Do we have any other question? Do you have any question here or not? Acha, the other thing that I wanted to that we want to talk about is like we said that this function can return more than just one value. This function can return more than just one value. ठीक है? ठीक है? So for example, right now it is returning y, just y. So y, we assign y the value true or false, which basically tells us whether the number x is perfect or not. Say for example, we want to return the factors as well. हम इस नंबर x के फैक्टर्स भी रिटर्न करना चाहते हैं ताकि आगे वाले बंदे को पता तो लगे कि इसके क्या फैक्टर्स थे, क्यों ये परफेक्ट नहीं है. ठीक है? So we want to return two things. One, the output y, which is either true or false. अगर true है तो इसका मतलब है कि x is perfect. अगर false है तो इसका मतलब है x is not perfect. Second, we want to return the factors of x. x के तमाम factors भी return करना चाहते हैं. ठीक है? So how would you do that? So we want to return two things. One is y, and the other thing that we want to return, it is factors of x. ठीक है? So we want to return two things. Y, the output of this function, which basically tells whether x is perfect or not, true or false, and factors. This is going to be a vector. So we want to return the factors of x as well. तो ये एक वेक्टर होगा जिसमें तमाम फैक्टर्स मौजूद होंगे. ठीक है? So how would you do that? Now फैक्टर्स मालूम तो हम यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है? हम यहाँ पे फैक्टर्स मालूम कर रहे हैं, बट उनको स्टोर नहीं कर रहे. ठीक है? तो इस केस में अब हम उनको स्टोर भी करना चाहेंगे. हम चाहेंगे कि फैक्टर्स को हम स्टोर भी करें. तो फैक्टर्स को हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? इन द वेक्टर फैक्टर्स. कैसे स्टोर करेंगे? So let me assign one is a factor of every number. One is a factor of every number. ठीक है? One divides every number. So one is a factor of every number. So we know कि पहला जो फैक्टर है वो 1 है. बाकी फैक्टर फिर हम 2 से स्टार्ट डिवाइड करना शुरू कर देंगे. So we'll start dividing x by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है? अच्छा. सिमिलरली सम को भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं विद 1. क्यों? क्योंकि फैक्टर्स जो हैं उसमें हमने पहले 1 को जो है वो पहले से एज्यूम कर लिया कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और फिर यहाँ हम d से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं. ओके, लेट्स वेट फॉर द पावर. ओके, सो we were modifying the isPerfect function, and the modification was that the isPerfect function is going to return two outputs. One, a true false value that would tell whether the input is perfect or not, and the other is a vector that would contain all the factors of x. ठीक है? So we initially we stored this value 1 in this vector factors. ठीक है? Because 1 is a factor of any number, and similarly we initialize the variable sum to 1. Why? Because we already included 1 as a factor in the list of factors. ठीक है? And here again we would find the remaining factors. 1 का तो हमने कह दिया कि 1 is a factor, तो 1 को हमने
फैक्टर्स की वेक्टर में डाल दिया है। अब 1 के अलावा बाकी फैक्टर्स मालूम करने हैं, तो वो 2 से फिर स्टार्ट होंगे, 2 3 4 5 6 7 अप अंटिल x बाई 2। तो हमने फिर वो वाले फैक्टर्स मालूम करने हैं और उसके लिए फिर ये लूप चलेगी। ठीक है, तो फैक्टर का हमें कहाँ पता चलता है? जब हम x को d से डिवाइड करें और हमें रिमाइंडर 0 मिले, तब हमें पता चलता है कि d इज़ अ फैक्टर। तो d को हम सम में इंक्लूड कर देते हैं बाय सेइंग सम इज इक्वल टू सम प्लस d। अब d को हमने इस फैक्टर्स का जो वेक्टर है इसमें भी डालना है, तो वो हम कैसे डालेंगे? तो ये काम हमने पहले किया हुआ है, जो फर्स्ट लैब सेशन था। सो से फॉर एग्जांपल मैं कमांड विंडो को क्लियर कर देता हूँ एंड देन आई से क्लियर द वर्कस्पेस विंडो एज वेल। अच्छा, से फॉर एग्जांपल आई हैव दिस वेक्टर a इज इक्वल टू 2 3। ठीक है, सो दिस इज अ वेक्टर a 2 3। अब मैं a को आई कैन चेंज a, हाउ? आई कैन से a इज इक्वल टू a और उसके साथ मैं 5 एंड 6 अपेंड कर देता हूँ, a के साथ मैं 5 और 6 लगा रहा हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा? आई कैन से a इज इक्वल टू एंड देन दिस वेक्टर विच इज़ अ कॉन्कैटिनेशन ऑफ a 5 एंड 6। तो a की नई वैल्यू क्या है? a की पुरानी वैल्यू और साथ में 5 और 6। तो a की पुरानी वैल्यू ये है, a इज़ अ वेक्टर 2 3। सो 2 3 के साथ 5 6 हम लगा रहे हैं। सो इसके बाद a क्या बन जाएगा? 2 3 5 6। ठीक है, इफ यू रिमेंबर वी हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम एज वेल ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। हमारे पास फैक्टर्स की इनिशियल वैल्यू 1 है, फिर जो भी नया हमें फैक्टर मिले उसको हमने ये जो वेक्टर फैक्टर्स है इसके साथ अपेंड कर देना है। तो नया फैक्टर कौन सा वाला होगा? d। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि d इज अ फैक्टर और नॉट। तो यहाँ पे इफ दिस कंडीशन इज ट्रू दैट मीन्स d इज अ फैक्टर। तो हमने d को फैक्टर्स के साथ अपेंड कर देना है। ठीक है, d को फैक्टर्स के साथ अपेंड कर देना है। सो वंस वी आर डन विद दिस लूप, तो फैक्टर्स में हमारे पास x के तमाम फैक्टर्स होंगे। जो फैक्टर्स वेक्टर है उसमें हमारे पास x के तमाम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, और वो हम रिटर्न कर रहे हैं एज आउटपुट। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएं इस स्क्रिप्ट फाइल में जहाँ पे हम इस परफेक्ट फंक्शन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इस परफेक्ट फंक्शन हमें एक आउटपुट नहीं दे रहा, 2 आउटपुट्स दे रहा है। ठीक है, 2 वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास आउटपुट के तौर पे, एक y और एक फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम किस वैल्यू को चेक कर रहे हैं? ठीक है, तो अब थोड़ा सा हमें ये आउटपुट भी तरीके से लेनी होगी। ठीक है, अच्छा कैसे लेंगे हम ये आउटपुट? तो हम यूँ करेंगे, हम कहेंगे कि जी इस परफेक्ट फंक्शन चूंकि हमें 2 आउटपुट्स दे रहा है, तो उन 2 आउटपुट्स को हम सेपरेट वेरिएबल्स को असाइन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो वेरिएबल है उसमें हमारे पास ये ट्रू और फॉल्स वाली आउटपुट आ रही है, तो से उसको हम वेरिएबल p को असाइन करते हैं। और दूसरे आउटपुट में हमारे पास फैक्टर्स की आउटपुट आ रही है, तो हम वेरिएबल्स p और f को ये फंक्शन असाइन कर देते हैं इज परफेक्ट। ठीक है, इज परफेक्ट AC। इसको समझ लें, ये हम क्या कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है ऐसा करने की? ऐसा करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ रही है कि अब हमने इस परफेक्ट फंक्शन को चेंज कर दिया है। नाउ इट इज़ रिटर्निंग अस 2 आउटपुट्स, 2 सेपरेट वेरिएबल्स एज आउटपुट रिटर्न कर रहा है। y जिसमें ट्रू फॉल्स वैल्यू होगी जो कि बताएगा कि x परफेक्ट है या नहीं, और वेक्टर फैक्टर्स जिसमें x के तमाम फैक्टर्स स्टोर्ड हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। तो जब आप इस परफेक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे तो तब आपने इन दोनों आउटपुट्स का ख्याल रखना है कि किस आउटपुट को मैंने कहाँ स्टोर करना है। यहाँ पे हम इस परफेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसकी पहली आउटपुट को हम वेरिएबल p में स्टोर कर रहे हैं, दूसरी आउटपुट को हम वेरिएबल f में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, तो P में हमारे पास y की वैल्यू आएगी, F में हमारे पास फैक्टर्स स्टोर होंगे। तो यहाँ जो इफ कंडीशन है इसमें फिर हम P को चेक करेंगे। अगर P ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि AC इज अ परफेक्ट नंबर और फिर हम उसके फैक्टर्स डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले F, ताकि हमें पता चले कि उसके फैक्टर्स कौन कौन से थे। और अगर फर्ज किया P ट्रू नहीं है तो हमें पता लगेगा कि AC परफेक्ट नहीं है। इन दैट केस एज वेल हम उसके फैक्टर्स डिस्प्ले करना चाहते हैं कि उसके फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये इस कोड में हमने चेंजेस की। अब इस कोड को अगर आप रन करते हैं तो आउटपुट आपको ये मिलेगा। सो 4 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। अच्छा, उससे पहले वाले कहाँ गए? हाँ, अच्छा, हमने 4 को कॉल, 4, 6, 10, 20 इनको कॉल किया था। 4 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। 4 के ये फैक्टर्स हैं, प्रॉपर फैक्टर्स ये हैं 1, 2, इनको आप अगर ऐड करें तो 3 बनता है। तो 3 इज नॉट इक्वल टू 4, दैट इज वाई इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। 6 इज अ परफेक्ट नंबर, ये उसके प्रॉपर फैक्टर्स हैं 1, 2, 3। 10 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, ये उसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 5, ठीक है। 20 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, उसके फैक्टर्स ये हैं 1, 2, 4, 5, 10, इनको ऐड करें तो 20 नहीं आता, ठीक है। 3, 4, 7, 5, 12, 10, 22, तो 22 इज नॉट इक्वल टू 20। 28 इज अ परफेक्ट नंबर, ये उसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 7, 14, इनको ऐड करें तो 28 आता है। फिर 36, समझ आई इसकी? हमने इस परफेक्ट को ऐसा फंक्शन बनाया जो कि एक से ज़्यादा आउटपुट्स रिटर्न करता है। 2 आउटपुट्स रिटर्न कर रहा है, एक ट्रू और फॉल्स की वैल्यू जो कि हमें ये बताती है कि आया x परफेक्ट नंबर है या नहीं, दूसरा x के तमाम फैक्टर्स वो हमें रिटर्न करती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। एनी क्वेश्चंस इन दिस? ठीक है। नाउ you'll only learn if you practice writing functions. So here we have some in-lab activities. In this in-lab session, so the first function that you need to write is the average function. You don't need to write this function because हमारे पास we have in Octave we have this function mean, ठीक है। Let me clear the command window. So we have, this is the vector A. If you want to find out the average value of all the elements in vector A, so we have the function mean. If I say mean of A, so मुझे A के तमाम elements की average value मिल जाएगी. So you don't need to write the average function in Octave, but just for the sake of practicing writing functions, के functions को कैसे आपने लिखना है, I want you to write the average function. एवरेज फंक्शन क्या करेगा, उसको आप एक वेक्टर इनपुट के तौर पे देंगे और वो आपको उस वेक्टर की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. So first you have to add all the elements of the vector, then you have to divide it by the length of that vector, so that will give you the average value. So you have to write a function in which you do that, ठीक है. So you have to use a for loop to add all the elements of the vector, and then you have to divide the sum by the length of the vector. So that would be the average value, ठीक है. So you have to write the average function that finds the average of a vector. Then you have to write a function stats. Stats क्या करेगा, किसी भी वेक्टर के स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करेगा. कौन से स्टैटिस्टिक? वी वांट टू फाइंड आउट द मीन, द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन. मीन क्या चीज़ है? इट इज़ द सेम एज एवरेज. अच्छा, वेरिएंस क्या चीज़ है? इट इज़ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एवरेज. हर एलिमेंट का आपने एवरेज से डिस्टेंस मालूम करना है और फिर उसका एवरेज मालूम करना है, ठीक है. एवरेज से डिस्टेंस समझ में आ रही है? एवरेज से डिस्टेंस. तो आपने एक्स वेक्टर के हर एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द मीन, या मीन से उसको सब्ट्रैक्ट करें और उसका स्क्वायर लें.
फिर इन तमाम का आपने एवरेज मालूम करना है. सो दैट वुड बी द वेरियंस. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस. यू कैन डू इट लेटर. आप पहले एवरेज फंक्शन को कैलकुलेट करें, फिर प्राइम नंबर्स का तो आपको पता है, ठीक है. सो इज प्राइम फंक्शन लिखें जो कि पता ट्रू या फॉल्स की वैल्यू रिटर्न करे इफ द इनपुट इज प्राइम और नॉट. अगर प्राइम है तो ट्रू की वैल्यू रिटर्न करे, अगर नहीं है तो फॉल्स की वैल्यू रिटर्न करे. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो ट्राई राइटिंग द मैक्स एंड मिन फंक्शंस जो कि किसी वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू मालूम करे या मिनिमम वैल्यू मालूम करे. इस परफेक्ट को हमने लिख लिया. सो दीज आर द टास्क दैट यू शुड डू इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस योर फंक्शन राइटिंग स्किल्स. ठीक है. सो लेट